तारे चमकते हैं। क्या आपको पता है क्यों? बहुत सारे रीजंस हैं। एक ये भी रीज़न है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पैसेज ऑफ स्टार्स। एंड दिस पैसेज इज इनविजिबल, साइलेंटली दे मूव, एंड it's that passage which makes them twinkle at night, which makes them shine. Taruk Open Mic, Stories that Inspire. Assalamu alaikum. My name is Sufi Muhammad Hussain. Today we are going to speak about few things which, if you implement in your life, you are going to stand out in area of your expertise. There are simple tweaks which you can do here and there, and then you'll find yourself more effective. Rather, it's not about profession, you can apply them in your life in general, and I believe they are common across professions. ऑफिस जाते टाइम, स्कूल या कॉलेज जाते टाइम, पर्टिकुलरली जो ड्राइव करता है वो इसको कनेक्ट कर पाएंगे। चलते चलते somebody overtakes you suddenly and you have to apply brakes and your car gets to a sudden halt. ऐसी सिचुएशन में आपको गुस्सा आएगा. What you can do? Your responses will be one of these. Number one, you will try to overspeed your car, catch that person and get involved in a street fight. Number two, आप चिल्लाना स्टार्ट करेंगे. तीसरा, आप गुस्सा होंगे, you will start cursing yourself, a government or the person who has given him that car. इन तीनों सूरतों में क्या होगा? एक कॉमन चीज़ होंगी. You will break the thread of your thoughts. जो आप सोच रहे थे उससे आप हट जाएंगे completely. और नुकसान किसका हुआ? In the worst case scenario, what will happen if you go ahead, overspeed your car, उसको ओवरटेक किया? पहली बात तो आपको मेडल नहीं मिलेगा, ना ही कोई रिकग्निशन मिलेगी. दूसरी बात, आप नीचे आके आपने उसके साथ लड़ाई करना स्टार्ट किया. You can get injured. And the task at hand, which you were otherwise going to do in that day, they can get delayed, they can get postponed, or they can simply get cancelled if you are injured. So, in a way, this thing has damaged you. Now, how can we respond to the same situation in some different manner? Next time, अगर कुछ ऐसा होता है, instead of acting impulsively, why not try this? Retain composure. Be grateful. Grateful for applying brakes in time, क्योंकि आप एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होने वाले थे. Rather than thinking that other person is a fool that he is driving so fast, आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? वो जल्दी में भी हो सकता है. Maybe there is an emergency, you never know. And then go ahead with your work. So what you have done? You have changed the line of thinking. The line in which otherwise you used to respond impulsively. You retained your composure, delayed your response, and then thoughts came altogether differently from out of your mind. And then you went ahead with your day. इस चीज़ को हम अगर एक वर्ड दें, इसको क्या कहेंगे हम? सब्र. सब्र जब होगा एक इंसान में, वही इंसान सुन सकता है, वही इंसान अपने आप को बचा सकता है एक इम्पल्सिव वे में एक्ट करने से, जो अदरवाइज चीज़ें हो सकती हैं. पेशेंस अब हम कैसे डेवलप करें? क्या हम अब प्रैक्टिस की बात करेंगे? पेशेंस एक क्वालिटी है जो अगर आप में है तो इट कैन गिव यू एन एज ओवर अदर पीपल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल act impulsively. But if you develop patience, you're certainly having an edge over other people. Now, when to practice it? आप इसको तब प्रैक्टिस करें जब इसकी ज़रूरत है. You cannot go into the room, practice something and come out with more patience. That's not going to happen. You have to build patience when you need it. Next time your father scolds you for something, instead of getting angry or self-crib, think that he's thinking for my development. He's thinking for my good, for my future. No. Nahi. I won't do it. Never. This all may seem negative to you,
लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि ना कहना आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा सकता है और इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। इनफैक्ट यस से तो ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। लेट्स गो इनटू डिटेल्स। यूजुअली अगर आपसे कोई फेवर मांगता है एंड यू आर नॉट इन अ हैबिट ऑफ सेइंग नो, फेवर्स एज इन आपने कोई नई चीज़ ले ली, आपका दोस्त आ गया बोला कि फॉर एग्जांपल आपने एक टी शर्ट ले ली, विदाउट यूजिंग इट समबडी इज टेलिंग यू कि गिव इट टू मी, मैं कल आपको वापस कर दूंगा। मे बी आपने कभी उसको ना नहीं बोला है एंड आउट ऑफ दैट हैबिट आप उसको दे रहे हैं, एंड देन इमीडिएटली व्हाट हैपन्स, दैट गिल्ट, दैट सेल्फ ग्रिप, दैट लाइन स्टार्ट्स गोइंग ऑन इनटू योर हेड, यार क्यों दे दी, देनी नहीं थी, अब मेरे को पुरानी टी शर्ट पहननी पड़ेगी, और एल्स यू डोंट इवन नो यू आर गोइंग टू गेट इट बैक। सो आपने ऐसा क्यों किया? There are so many things which, because of which you resolve in saying yes rather than saying no, which you otherwise want to say. Number one, peer pressure. दोस्त है, एक ग्रुप है, आप लोग आपस में ना नहीं कहते, बोल दिया। 2, habitually. आपसे किसी ने ना सुना ही नहीं है, कोई भी आपको कोई चीज़ दे रहा है तो आप दिए जा रहे हो। वाई? बिकॉज यू आर नॉट इन अ हैबिट ऑफ सेइंग नो। 3rd, टू गेन एप्रिसिएशन विच नेवर हैपन्स। आजमा के देख लो, आप ना नहीं बोल पाए या ना नहीं बोल पाते, उससे आपको क्या नुकसान होता है? बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग इन अ हैबिट ऑफ सेइंग नो, योर थिंग्स आर यूज्ड बाय द पीपल यू अदरवाइज डोंट वांट देम टू यूज। आपका टाइम, somebody invites you to a party which you don't want to go, maybe आप घर पे बैठना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या जस्ट ऐसे ही अपना म्यूजिक सुनना चाहते हैं, but then you are not in a habit of saying no, you end up in saying yes, and then you feel miserable in a party or that gathering wherever you find yourself to go. आपने सुना कि ना कहने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हमें। अब ना कहने से हमें फ़ायदे भी हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहला चीज़, फर्स्ट थिंग विच विल हैपन इज यू विल सेव योर टाइम, यू विल स्टार्ट वैल्यूइंग सॉलिट्यूड। इफ़ यू डोंट लाइक कंपनी, सॉलिट्यूड इज एन एसेंस। कहते हैं यू कैन स्कल्पचर आउट ऑफ अ रेगुलर स्टोन विच वी आर द वे वी आर सेंट टू दिस अर्थ। या कुछ और बेनिफिट्स की बात करेंगे, जैसे यू एस्टैब्लिश बाउंड्रीज। तो उससे क्या होगा? People will start knowing, okay, this is our limit. We cannot go ahead asking things using time. And जो आपके दिमाग में फेयर है कि अगर मैंने ना कहा तो लोग मुझे अप्रिशिएट करना छोड़ देंगे, I will not gain that respect and love. The reverse thing happens when you start saying no. People start valuing you, and it's a fact. You will try it. बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे हमने peer pressure की बात की, वैसे ही you may not be in a habit of saying no, or you may not say no because it may seem absurd to you. यार क्या मैं इसको ना बोलूँ? It may seem embarrassing, but this change has to start somewhere. Give yourself permission to say no, and then you will see things evolving or things changing around you. So learn to say no. There are few of the things which I am going to tell you. After saying no, stay adamant. There may be a little voice in your head which may say, अरे क्या कर रहे हो यार, दे दो. But once you have said no, stay firm on your decision. Change the topic, you can do that. Or if you don't want to talk, say no, then get away from that situation. अब हमने ना की बात कही, but saying no doesn't mean that you will go on saying no to everything, to each person. There are limits. And you will get to know about this because there is an instinct. जब वो सेल्फ गिल्ट वाली लाइन आ जाती है ना बीच में कि यार मैंने ना कहना चाहिए था, मैंने इसको क्यों अपनी चीज़ दी, दैट मीन्स एट दैट टाइम यू विल हैव टू से नो. क्योंकि हम यूजुअली क्या करते हैं, वी डोंट वांट दैट पर्सन टू गो आउट ऑफ आवर लाइफ, वी एंड अप इन सेइंग यस, एंड वी डोंट वांट अदर पर्सन टू फील embarrassed or feel guilty. You end up in saying yes. But then even after saying no,
The people who stay in your life are the people who you need, who should be around you. And the people who will go even after you say yes, let them go. You don't need them, honestly. Do you remember last time you went into self-praise? You started praising yourself. You talked about something which you have done to a group of people, to your friends, in a manner in which it doesn't actually happen. You added little drama, थोड़ा सा आपने मिर्ची मसाला डाल के present किया. But you know the true story. That is that inner voice telling you, no, it didn't happen that way. Or you were not the person who did that thing. You are, let's say, plagiarizing, telling somebody else's stories and representing yourself as a main actor in that. Sometimes we do these things, or some people do this. Why? There are reasons: to get appreciation, to get respect, to get love, to be known among the people. Even if you have started some project, people try to exaggerate it. एक छोटा सा प्रोजेक्ट को इतना बड़ा बना देते हैं, but then when we get to know the actual thing, it's very small. And what about that respect you wanted? What about that appreciation you wanted? What about that love you wanted? It's dashed. Let's change our approach. Why not be a little humble? Show humility. Let's not talk about, or let's not exaggerate things. Rather, what happens next time, what you will do when you're going to go into the full swing self-praise. Let's change it a little. Tell a true story. What happened that time? Maybe किसी और ने कुछ heroic act किया हो, किसी accident को बचाया हो, किसी accident को होने से रोका हो, या कोई fire incident हुआ हो कहीं पे, वहाँ से लोगों को बचाया हो. उसको appreciate करो या उसको represent करो rather than representing yourself. So next time when you are about to get into a full-scale self-praise, try this. Try a true story rather. Instead of exaggerating yourself or making yourself hero, tell about the real person. Or tell about what you have done without exaggerating it. Or better, don't even tell about it. Why? People will anyways get to know about it because there are sources. If you have done something really appreciable, they will easily come to know about it. And when they come to know about it, not directly from you, the appreciation, the love, the respect which you would have got by saying it directly, it will be doubled, tripled, multiple times it will increase. Why? Because people will think that he had a chance of saying it yesterday when we met, but then he didn't. Practice humility. मदद करो किसी की. Anonymously, you don't have to show your face. You don't have to tell it to the people that I helped somebody. You will get that the kind of satisfaction that you will have. You will not get it from doing anything. You will not get it from saying about. You will not get it from self-praising. You will not get it. You will not get respect by just asking about respect. So these are the things which we can implement in our lives. These are not even, I can say, qualities to develop. These are little tweaks which we can do here and there in our life to stand out. And we don't need anybody's intervention. किसी की आपको help नहीं चाहिए जो आपको ना कहना सिखाए या आपको कहीं ना कहीं start करना है. किसी की आपको ज़रूरत नहीं है जो आपको सब्र सिखाए या आपको खुद practice करना है. या ना ही किसी की ज़रूरत है आपको humble या humility सिखाने की. ऐसे ही कहीं और सारे टॉपिक्स को मैंने डिस्कस किया हुआ है अपनी एक बुक में जिसका नाम है पैसेज ऑफ स्टार्स. द टैगलाइन इज गॉड हेल्प्स दोज हु कैन नॉट हेल्प देमसेल्व्स फॉर एवरीवन एल्स हु कैन हेल्प योरसेल्फ. मेरा मानना है कि अल्लाह, खुदा, गॉड, जिसको भी आप मानते हैं, वो उनकी हेल्प करता है जिनको हेल्प की ज़रूरत है. बाकी सारे लोग जिनकी आंखें सही है, they are in a good health, you have your limbs intact, you can help yourself. How? There are things written in the book. So this is my book, Passage of Stars. The topics I have just mentioned are written in the book in more details. So you can go ahead and find this book online and find some valuable lessons. Thank you so much.